Hello, my dear students. How are you all? I hope that you all are fit and fine and staying safe at your home. So for CACET paper 4, we are discussing about various national body, international bodies, conferences and summits and so many things we discussed, business personalities and books. And today I am going to tell you about the awards and honor, some important awards and honor which are given, and we will discuss everything about these awards today. Okay, so here you can see the screen, and now let us start. Firstly, I'll tell you that the Padma Award, it is the highest civilian award honor of India, and it is always given on the Republic Day, and the award seeks to recognize the achievement in all the fields of activities or discipline where an element of public service is involved. मतलब पब्लिक सर्विस के सेक्टर में जो भी बड़े अचीवमेंट्स होते हैं उनके लिए पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं. ठीक है. एज यू कैन सी दैट इंडियन गवर्नमेंट के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं वो ये दो अवार्ड्स हैं, भारत रत्न अवार्ड एंड पद्म विभूषण. तो ये दोनों ही अवार्ड हमारे स्टार्ट किए गए थे 1954 में. 1954 से ये हमारे दोनों अवार्ड देना शुरू किया गया था, और उसके बाद जो हमारा पद्मा अवार्ड है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग. अब इन तीन पहले तो इन्हें वर्ग का नाम दिया गया, लेकिन आज हम इन्हें जानते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स के नाम से. तो ये 3 हमारे वर्ग जो पहले थे उनको रीनेम किया गया और पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण नाम दिया गया इन जनवरी 1955. 8 जनवरी को इन तीनों ही जो अवार्ड्स हैं उनको रीनेम किया गया. ओके, now here you can see that Bharat Ratna, let us discuss about the Bharat Ratna award. It is the highest civilian award of our country, you know that very well, and this award is given for the service and performance of highest order in any field of the human endeavors. मतलब किसी भी फील्ड में अगर आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट कुछ किया है, एकदम प्रॉमिसिंग वर्क आपका कोई है, तो उसके लिए आपको भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है. भारत रत्न अवार्ड जो दिया जाता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों ही इसके रिकमेंडेशंस देते हैं. सारे रिकमेंडेशंस हमारे पीएम और प्रेसिडेंट द्वारा दिए जाते हैं. देन आफ्टर वन मोर थिंग इज देयर that now government conferred 48 person as on September 25, 2019. 2019 सितंबर में हमारे 48 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न अवार्ड, जिसमें से हम मेन कुछ जो मेन हमारे मेजर लोग हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे. एज यू कैन सी, श्री प्रणब मुखर्जी, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस एमिनेंट पर्सनालिटी. ही वाज द 13th President of Indian Finance and Defense and External Affairs, and this award was given on 25th of September 2019 to Shri Pranab Mukherjee. Then after here you can see Shri Nanaji Deshmukh, who is a veteran social worker, and his work in a field of education, health and particularly in rural development built the new paradigm for the empowering our village. So his work was really very great and he deserved this award. Now the next is here Shri Bhupen Hazarika. Shri Bhupen Hazarika, he is a legendary singer, he is a lyricist and poet and a very eminent personality in music field, and he is at the global level. So he also deserved this eminent award, and in 2019 these are some major awardees, and here we can see about the Padma Award. Now about the Padma Award, let me tell you that in 1954 these awards
were started, and it is announced every year on the day of Republic Day. Okay, now here you can see 3 dates, 3 years are there when just because of some interruption these awards were not given. Here you can see in 1978, 1979, 1993 and 1997. So these are the dates that you need to remember. Now you can see that this award is given in 3 categories. Here you can see that 2 types of award, highest civilian awards are there, that are Bharat Ratna and Padma awards. In this Padma award, 3 awards we are giving, that are Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. Okay, in Padma Vibhushan, it is given for the exceptional and distinguished services. Padma Bhushan is given for the distinguished services for a high order, and Padma Shri award is given for the distinguished services.